Thank you very much for having me. अच्छा ग्लूकोज लगा के आए हैं, ड्रिप लगा के आए हैं, क्यों इतना ये वाला क्यों? He's such a cute boy, you know. I really like Pakistan. Handsome men, you know, very nice. I like it here. This is not the thing. It's the thing. It's not the thing. I know what thing this is. Your thing is smaller. Oh no. Artist जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. Thinking this while we were doing the interview. I love to work with you. Voice acting in channel. Yes. What's up? And the legend. Actually. एक आदत जो मेरी सबसे बुरी है. मुझे तो आपकी कोई आदत ऐसी बुरी नहीं लगती. मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ. मेरा तो अभी तक नहीं आप अपनी बताओ. मैं अपनी बता. Yes. अच्छा मैं आपकी तारीफ. लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली हरकत जो आप करते हैं. नहीं. Oh no. Everybody knows. No, but nobody knows. You know. Don't need to tell others. What I want my legacy to be. That I was a good person. अच्छा मैं डांसर कहना. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है डीनो अली. मेरा नाम उस्मान रियाज है. And you can watch us on Excuse Me with Ahmed Ali Butt बहुत जल्द. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी. भाईजान जीनियस आपको पता है क्या होता है? मैं नहीं मगर जीनियस वो होता है कि जो हैज़ टू पे अ वेरी हैवी प्राइस ऑफ वर्किंग और एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू मीडियोक्रिटी. बिकॉज जब आप जीनियस होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द सारे जो होते हैं वो आपके लेवल के नहीं होते हैं. इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स. हमारे जो आज के मेहमान हैं, ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट. बिकॉज बहुत कम उम्र में म्यूज़िक के साथ साथ हैंड ड्रॉन एनिमेशन के साथ साथ म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं एक फ़िल्म बनाता हूँ जिसमें हुमायूं सईद नहीं लूँगा, मैं एनिमेशन के साथ मैं बनाऊँगा. तो ये एक निशानी होती है उस बंदे की जो कि वांट टू अचीव मोर देन हिज लिमिट्स आर. बट 9 साल के अंदर मौला जट बनी थी. इन्होंने भी कहा कि मैं भी कोई 8-9 साल लगा के एक फ़िल्म बनाऊँगा. आज हमारे शो पे आए हुए हैं. आई वॉन्टेड टू आस्क हिम एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम बिकॉज इनकी अभी तक मैंने फ़िल्म नहीं देखी. वो भी क्यों नहीं देखी मैं आपको बताता हूँ. लेकिन प्लीज़ वेलकम द क्रिएटर ऑफ ग्लास वर्कर मिस्टर उस्मान रियाज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you very much for having me. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. अच्छा ग्लूकोज लगा के आए हैं, ड्रिप लगा के आए हुए, क्यों इतना ये वाला क्यों? पता नहीं. मैंने कहा ना प्राइस ऑफ जीनियस. द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू. मैंने अपने बेटे को कहा यार आओ ग्लास वर्कर देखते हैं, और हम लोग उस वक्त देख रहे थे. एक फिल्म थी हम लोग देखी थी इनसाइड आउट 2. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ग्लास वर्कर भी देखनी है. तो उसने कहा नहीं बाबा. मैंने कहा नहीं इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म. तो कहते बाबा दे डोंट लुक पाकिस्तानी. ये उसका पहला सवाल था. मुझे एकदम रियलाइज हुआ. मैंने कहा हाँ, वाई डोंट द ग्लास वर्कर जो कि एक पाकिस्तानी ने इंसेप्शन से क्रिएशन और उसके एग्जीक्यूशन तक लेके आया, उसमें पाकिस्तानी क्यों नहीं लग रहे लोग? रेसिस्ट. तो अगर आप एनिमेशन की एस्थेटिक्स देखें और स्पेसिफिकली जापानीज एनिमेशन, जो एनिमे का जो जॉनरा है, उसमें अगर आप कैरेक्टर डिजाइंस को देखेंगे, दे डोंट लुक जापानीज आइदर. देयर इज अ काइंड ऑफ जेनेरिक लुक दैट द कैरेक्टर्स हैव विद देयर big eyes and small noses. References are there. Yes. Okay. So the Japanese aspects of those, if there's a show or if it's a movie, even if you take the Studio Ghibli movies, the way the characters dress and the environment that the characters are in, the suspension of disbelief in that medium allows you to accept that okay, they're Japanese or they're European or wherever the show or movie is based. तो इस फिल्म के साथ हमने उसी एस्थेटिक से इंस्पायर होके अपने कैरेक्टर डिज़ाइंस बनाए. और उसमें यस वी हैव अ विंसेंट, वी हैव एन अलीज, बट वी आल्सो हैव अ नादिया, वी हैव मलिक, वी हैव मेरे मालिक विंसेंट था. मतलब विंसेंट नाम किस पाकिस्तानी का होगा? विंसेंट पाकिस्तानी का नाम नहीं है. वो तो किसी ने कहा नहीं कि यार उस्मान बिल्ली आंखें किसी की भी नहीं है. मतलब किसी ने कहा नहीं कि भाई ब्लू आइज हमारी तो होती नहीं, हमारी तो वो है नहीं होती है, बट ऑडियंस का वो नहीं आ जाएगा कि यार we can't relate to it. See, I wanted to make an impact in the global animation space. Okay. I wanted to take something that viewers are familiar with, especially animation viewers for the anime genre. Take that and apply the
Pakistani elements to that aesthetic, and then make something that international audiences can see and also Pakistani audiences can see. And when you do go watch the film, the way the characters are behaving, और अगर आप उर्दू version specifically देख रहे हैं, तो जिस तरह का dialogue हमने लिखा है और जो environments है film में, जैसे Empress Market से बहुत inspiration ली. It's very colonial. वो आपका जो pre-war वाला era था, आपने वो वाला दिखाया है. Yes. Why war as a backdrop? The world changed after 9/11, and I grew up in that time. Obviously, we didn't go through the things that were happening in the countries around us, but एक underlying tension थी जब आप बड़े हो रहे थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, और जो जंग जो दुनिया में जो एक शुरू हो गई थी, it really affected my childhood and the people who I was growing up around in school. लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे, we didn't really think about it that much. It just was a mental switch. एक base level anxiety आ गई थी कि हम अलग हैं, we're different, which the world wasn't like that before. I wanted to capture that feeling in this film and talk about, because the film is an anti-war film. Yeah. The film is about how the atrocities of war, how they affect people, and ultimately it's the people who suffer, regardless of whoever the victor is. But I didn't want to be preachy about it. And I also wanted to explore the ideas of art in wartime. What is the significance of art? What is the significance of all of these things, these creative pursuits that we do when the world is falling apart around us? But the themes in the film, they tackle these things, but I tried to do it in a subtle way. ताकि अगर आपको सिर्फ एक मूवी देखनी है about a glass worker and expanding his creative powers and learning from the things around him, वो भी है film में. It's about a relationship between two characters, both whom are artists. एक Vincent है जो एक apprentice glass blower है, learning from his father in their glass shop. फिर Elise का जो character है, she's a prodigious violinist, struggling to find her own unique voice on the instrument. And as the war is getting worse around them, how their relationship is affected. That's the human aspect of the story. You said that 9/11 changed a lot of things. Where were you at 9/11? I was 9 years old, and I remember watching the news reports, and just, it was a scary time because you didn't know. No, you were in Pakistan. Pakistan mein tha, ji. But you didn't know what was going to happen. And I remember कि अगले दिन स्कूल पे भी छुट्टी मिल गई थी, and just this base level of anxiety in all of the adults around me. I wasn't old enough to understand what was happening, but everything changed after that. And how my childhood was affected, how other people around me were affected. We still found reasons to keep living, keep moving forward, but it changed everybody as people. You knew that you were different just because of where you were from, especially in this part of the world. But again, tackling that in a very subtle way. If you don't want to see that in the film, you don't have to see that. You started music at a very early age. आपने almost मेरे ख्याल है interviews में भी कहा कि music was the first inspiration in your upbringing. वालिद साहब या अम्मा की तरफ से कहाँ से आया ये? So both music and drawing I'd been doing since I was small. I've been drawing. Family में थी inspiration? जी. So I'd been drawing since I could hold a pencil, and I've been playing music because everyone in my family played music. Zia Moyuddin, मैं उनको दादा मामू कहता हूँ, but he was my mother's brother. So there was a lot of just Urdu literature and poetry in our household. और फिर मौसीकी की महफिलें भी बहुत होती थी हमारे घर में. तो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इज़ हाउ आई डिडंट स्टार्ट ऑन द पियानो. मैं पहले हारमोनियम पे बजाता था. एंड माई ग्रैंड मदर हु वाज अ म्यूजिशियन, शी सॉ दैट there's a talent here to pursue, and she convinced my family कि इसको पियानो सिखाएं क्योंकि फिर वो अपनी म्यूजिक लिख सकेगा. कंपोज कर सकता. तो इसलिए मैंने फिर पियानो शुरू किया बचपन में. एंड ड्राइंग इज़ फ्रॉम माई मदर्स साइड. माई मदर इज़ एन आर्टिस्ट, हर सिस्टर इज़ एन आर्टिस्ट, माई खाला फाइन आर्टिस्ट. तो ड्राइंग में उनके साथ बैठ के बचपन से मतलब स्केचिंग और स्टिल लाइफ करता रहता था. सो देयर वाज ऑलवेज दीज टू aspects of my upbringing. And then there's a lot of actors in my family as well. Amid Riaz, my father, अगर आपने mystery theater देखा था तो PTV पे जो आता था, तो he was the ghost in mystery theater. और खालिद अनम का जो गाना है पीरा हो, उस पे भी वो थे. और फिर ग्रिप्स थिएटर ग्रुप, मतलब कीड़ा है फिर, मतलब जी कीड़ा है सर, कीड़ा. तो I grew up in an environment like that, and
आई नेवर थॉट बड़े होके कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, वो तो मैं कभी भी नहीं सोच रहा था. आई जस्ट लव्ड परस्यूइंग दीज थिंग्स. अच्छा, हम